Jai Jagannath. So, welcome to my channel, Speak Strong English. So, आज हम CHSE रो chapter 2 on examinations जार गोटे वीडियो ऑलरेडी ड्रॉप ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିडिଓ ତାର ଅପଲୋଡ କରିବା so Churchill and his dislike of examinations Churchill ଆଉ ସେ examinations ରେ କଣ କଣ dislike କରୁଥିଲା Churchill enters the world of examination at very young age ତାଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଟାଇମ ରୁ ଛୋଟ youngest time ରୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ examination ରେ enter କଲେ जोटा कि ऑब्वियसली आमे कहि परिबा जे तांकर जेतेबेले 12 इयर्स हेइथिला जस्ट एबव एज ऑफ 12 एज परे परे तो सेतेबेले से एग्जामिनेशंस बा एग्जाम्स फेस करबा स्टार्ट कर देले जोटा को आमे गोटे इनहॉस्पिटेबल रीजन्स बोली कहूचे for the next years next 7 years examinations become a difficult journey in his life the next 12 वर्ष ପରେ next 7 years पर्यंत तांकर examinations रो journey पूरा start हे गला full preparation with examinations he finds examinations hard unpleasant and mentally tiring so that कि examinations को से भाबले जे examination तांका पे बहुत strict थिला and not enjoyable नथिला and which is very tiring means बहुत tired mentally tiredness थिला तांका पे the subject loved by examiners are Latin and mathematics but Churchill likes history poetry and writing essay or the essay writing so that दीटा difference थिला जो examiner तांकर जे थिले से like करथिले कोन ना हमर Latin और mathematics but Winston Churchill like करथिले HPW history poetry and writing essays there is a mismatch lack of agreement between his interests and examination systems तो तांको इंटरेस्ट और एग्जामिनेशन सिस्टम भितर गोटे बहुत बड़ा मिसमैच थिला कोन देखियो सेटा द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स ही डज नॉट नो वेल तो जो जो एरिया रे बा जो जो टॉपिक्स ऊपर आंकर नॉलेज नथिला सेही ऊपर एग्जामिनर्स माने तांको क्वेश्चन पचारुथिले दे ट्राई टू टेस्ट हिज वीकनेस इंस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ तो से ट्राई करूथिले जो विंस्टन चर्चिल कर जो वीकनेस अछि से वीकनेस ऊपर से क्वेश्चन पचारुथिले बट तांकर जो सब्जेक्ट ऊपर स्ट्रांगनेस अछि से स्ट्रांगनेस ऊपर से केबे क्वेश्चन पचारु नथिले he wants to show what he knows but the exam system exposes with he does not know but सी चाहूथिले तांकर नॉलेज शो करिया पेंगा जो नॉलेज ता तांकर अछि बा हिस्ट्री पोएट्री राइटिंग एसे बट जो एग्जामिनर्स माने अछंती थिले से माने तांकर जो वीक पॉइंट जो उडा थिला से जिंस उडा को से माने एक्सपोज करूथिले as a result he does not do well in examination जोथि पेंगे से एग्जामिनेशंस रे केबे भी भलो परफॉर्मेंस करि पारो नथिला एटा तांको पे गोटे बैक पॉइंट थिला this becomes especially true in entrance examinations to Harrow in the Latin paper he is unable to answer even one question देखो देखा जाउची जोटा Latin paper अछि Harrow तो Harrow रे एग्जामिनेशन जोटा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बा प्रवेशिका परीक्षा थिला ता पूर्व से इटोन रे पढुथिले इटोन परे से Harrow को जॉइन करले तो से टाइम रे तांकर लैटिन पेपर रे कोनसे प्रकार क्वेश्चंस रा आंसर तांको आसिला नाही in the Latin paper he is unable to answer even one questions then he writes to question number 1 okay तो कोनसी क्वेश्चन नंबर आंसर तांको आसिला नाही टॉप ऑफ द पेज रे तांको ना लिखिले तापर क्वेश्चन नंबर 1 देले ओके देन ताको ब्रैकेट करले बट ता रिलेटेड को से जो लैटिन पेपर रिलेटेड कोनसे प्रकार तारा आंसर तांको आसिला नाही after much thinking he puts a bracket around it तापर गोटे ब्रैकेट देले and but he cannot write anything relevant or true after that but ता प्रति जे किछि relevant बा connected answer बा related answer तांको कोनोसी आसिला कोनोसी प्रकार आंसर आसिला नाही लैटिन पेपर related answer the paper remains almost blank except for blot and the smudges like that किछि ink आसी के तांकर पेपर रे पड़ी गला कोडू जानि परलेनी से and किछि smudges like that एक मार्क कोडा बा तांकर tears कोडा आखिरु बाहरी के तांको पेपर ऊपर पड़िला बट बुक रे जो ग्लोसरी वर्ड्स अछि सेथरे ब्लड एंड स्मजेस रो मीनिंग होचे टीयर पड़ी की तांको कॉपीटा ओदा हे गला बा किछि मार्क्स हे गला तांको कॉपी रे for 2 hours he keeps looking at this sad answer sheet finally he the users collect his paper and take it away तो 2 घंटा काल एमती से एग्जामिनेशंस हॉल रे बसिले एंड केते समय परे तांकर जो यूजर्स माने थिले बा अटेंडेंट्स माने थिले से माने कॉपी को कलेक्शन कले एंड कलेक्शन करिकी से कॉपी को नेकी डॉक्टर वेल्डन को टेबल पाखर नेकी रखिले इवन फ्रॉम दिस poor performance Dr. Weldon judges him wisely
Dr. Weldon looks beyond the surface of the answer paper. So that Dr. Weldon is a very intelligent person and ସିଏ paper manifestation ବା writing ଉପରେ ସେ depend କଲେ ନାହିଁ but ତାଙ୍କୁ ସେ ହାରରେ pass କରେଇଦେଲେ. He understands Churchill's general ability and potential. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ general ability ଥିଲା overall talent ଉପରେ ବା overall talent କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପେପରରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ପିଲାଟା ଭଲ ଅଛି ତାର knowledge ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ qualify କରେଇଦେଲେ. Churchill gets admission into Harrow because of the headmaster's broad-minded judgment. जदि चर्चिल को हारो रे एडमिशन मिलिला तार रीजन होउछन किए से ना डॉक्टर वेल्डन बा तांकर हेडमास्टर वेल्डन. Churchill gives full credit to Dr. Weldon for his success. He deeply respects him for seeing beyond paper performance. So that जेहेतु से तांको ପାଇଁ का ही पास करि परले हारो रे नले से पास करि पारि नथांदे तेनु तांको ପାଇଁ तांको ଗୋଟେ बेस्ट रिगार्ड्स रहउची बा बेस्ट रेस्पेक्ट रहउची. After admission, Churchill is placed in the third division of the fourth form. ତେଣୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଆସିଲା ପୋଜିସନ ହଉଛି ସେ फोर्थ क्लास ର थर्ड डिवीजन पाइले बा थर्ड सेक्शन से पाइले. After admission, Churchill is placed in the third division of the fourth form. This is the lowest section of the lowest class. His full name was Spencer Churchill, begin with S. So even alphabetically letter wise, he gets no advantage. देखो एमती तो एक रे रिजल्ट बेसिस हेले रिजल्ट रो रैंक बेसिस हेले से लास्ट रे ही रहिबे बट तांको स्कूल जो रोल कॉल्स थिला सेटा अल्फाबेट ऑर्डर रे सेटा रखा जाउथला बा अटेंडेंस तो ऑब्वियसली आंको ना जेहेतु स्पेंसर चर्चिल थिला तो सेथि बें का आंको ना मध्य लास्ट रे ही रहिला. He stands almost at the bottom of the whole class list. Only two boys are below him from those two disappeared because of other reasons. So Churchill effectively becomes the last boy in the class. तो तांको परे आउ दीटा पिला ही थिले बा चर्चिल लास्ट आडू 3 नंबर रे थिले तांको परे बा तांको तळे बिलो दीटा पिला थिले ड्यू टू एनी इलनेस और सिकनेस से माने स्कूल रो डिसअपियर हे गेले बा स्कूल से माने छाडी देले तो ये पूरा लास्ट ही रहि गेले. At Harrow, boys answer roll calls one while passing before a master, so Churchill's low position becomes publicly visible. Harrow रे कोन थिले ना समस्ते निज रोल नंबर अनुसार लाइन में छेड़ा होतले एंड ताकर मास्टर वन बाय वन करके रोल नंबर पकोथले. ओके तो जो थे ताकर जणा पड़ जाउथले कि चर्चिल रो रोल नंबर पूरा लास्ट रे अछि. Visitors often come to see him because his father Lord Randolph Churchill is famous. तांको फादर बहुत जने फेमस पर्सन थिले एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थिले लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स थिले तने बहुत सारा पब्लिक तांको देखिया पाएंगा तांको स्कूल को आसुथिले. पीपल वॉच हिम मार्चिंग by in the school they make the comment or the why he is last of all तेणु लोक मान भीतर गोटे कमेंट थिला जे सी काहे की लास्ट रे सब बळे छिडा होछंदे. Thus Churchill's poor rank becomes a matter of public embarrassment. ओके मीन्स तांको गोटे लाज लागुथिला जे सब बळे लास्ट रे रहउछंदी लोक माने तांको विषय एमति सब कथा वार्ता करूछंदी. So many exams fail to judge real talent. The Churchill's poor rank becomes a matter of public embarrassment. तेणु तांकर जो poor performance टा जोटा public मानक आगर तांको गोटे लज्जित होबा को पडुथला. Churchill's real education at Harrow. Churchill remained in the lowest form for nearly 3 years. सेटा ए ईयर अछि 3 वर्ष पर्यंत कंटिन्यूअसली से गोटे पोजीशन रे रहिले. Though this seems humiliating, it gives him an unexpected advantage. The clever boys move on to study Latin, Greek, and other advanced subject. तेणु ये कंटिन्यूअसली इंग्लिश पढ़िले जेतु से डॉन्सेस थिले बा स्लो लर्नर थिले बट जो माने क्लेवर बॉयज थिले से माने लैटिन ग्रीक पढुथिले एंड किछ अदर रेस्पेक्टेड बा क्लासिकल सब्जेक्ट्स पढाबो. बट चर्चिल एंड अदर वीक बॉयज आर टॉट ओनली इंग्लिश. They are considered too dull or the slow learner for higher classical studies. तेणु हायर क्लासिकल स्टडीज ପାଇଁ का एमाने बहुत ठू बा स्लो लर्नर थिले बा डांसेस थिले बा बहुत डल थिले तेणु एमाने ओनली इंग्लिश पढुथिले एमाने क्लासिकल सब्जेक्ट किछ पढु नथिले. They are considered too dull. Yet this ordinary English teaching becomes the strongest foundation Churchill's life. His English teacher is Mr. Somerville. तेणु मिस्टर समरवेल जे थिले तांकर इंग्लिश टीचर एंड तांको इंप्लीमेंटेशन करा जायतिला केवल डांसेस मानक पाएंगे इंग्लिश पढ़ा पाएंगे जो माने स्लो लर्नर डांसेस डॉल से मानक ही से इंग्लिश पढ़ौथिले तांको पाए ही आंकू इंप्लीमेंटेशन करा जायतिला एज द इंग्लिश टीचर. He says he owes a great debt to some Mr. Somerville. Mr. Somerville is asked to teach the stupidest boys most disregarded thing. तेणु तांको दायित्व देइथिला जो माने स्टुपिडेस्ट बॉयज थिले तांको ही पाठ पढाइबा स्लो लर्नर मानकू. That disregarded thing is mere English.
but he teaches in the extraordinary way. He teaches English parsing, okay, thoroughly. Parsing माने grammar division. से मैंने गोटे गोटे बड़ा sentence नौतले ताकू पार्ट कर दोतले पार्ट कर दोतले सबु वर्ड को बा जो वर्ड पार्टीशन करूतले बा क्लॉजेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एमती करिक तो पार्टीशन करूतले एंड समस्त गोटे कलर थिला सब कलर देके पिला को बुझे से पाठ पढौतले. He also give a continuous practice in English analysis. He breaks long sentences into parts. He uses different colored inks for different grammatical elements. He uses different colored ink for different grammatical elements. So जते सारा अलग अलग grammatical elements थिले समस्त को पाएगा से different color से use करूथले. पर parsing method, पर parsing technique of teaching the grammar or the sentences that गोटे sentence long sentence नौथले ताको पार्ट करूथले and प्रति word को अलग अलग color से लिखुथले बा प्रति grammatical elements को अलग अलग color से लिखुथले. Subject Churchill's daily English grammar drill, subject, verb, object, clauses are all marked clearly. This becomes a kind of daily drill. तो regularly से ये सब जिनसे subject, object, verb, clause like that सब जिनसे से regularly पढ़ोतले. Because Churchill stays longer in the third, fourth, he gets more practice than others. जेहेतु third, fourth रे बहुत longer time पर्यंत रहिले 3 times. तो जो थी पाएंगा तांकर गोटे भलो practice है गला. And he became the senior of his class. He studies this sentence structure again and again. As a result, the structure of English enters into his bones. Deeply learned. पूरा तांको मुंडरे पूरा सेव हेगी रहेगा. जेते हमें गोटे किछि एक्सीडेंट देखुचे, किछि गोटे अलगा मैटर देखुचे जोटा हम माइंड रे पूरा सेव हेगी रहि होचे एंड बहुत दिन पर्यंत हम ताको मन रखि पारुचे. So as like that saves in our bone. So that कि जो इंग्लिश कोटा से डेली प्रैक्टिस करथले बा ड्रिल करथले जोटा तांकर बोन्स रे सेव हेगी रहि होला. जोटा माने डीपली रिमाइंड बट डीपली मेमोराइज्ड. He learns the essential pattern of the British English thoroughly. Weakness becomes the strength through English learning. Later in life, the training proves extremely valuable. Its school fellows may have won prizes in Latin and Greek, but when they return to ordinary English for earning in a living, Churchill feed no disadvantage. Okay, so जो माने Latin Greek पढ़ुथले से माने पुणी तांको ordinary English पढ़िया पाइंका पढ़िला. जेहेतु तांकर सेटा नेटिव लैंग्वेज थिला. In practical life, strong English becomes more useful than classical learning. But practical life रे classical English एते यूज हुएनी. But जोटा normal English अछि तांकर से English सब जगह यूज हुए जोटा native language तांकर England रो. Therefore, Churchill develops a strong bias in favor of English educations. He believes all boys should first learn English properly. But Churchill कहबा कथा जे सब boys माने first English पढ़िबा दरकार. Only the clever ones should learn Latin and as honor. Greek should be treated as special pleasure. तेणु सी तांकर जो पिला मानु कहउथले तुम Latin honor पाएंगा तुम Latin पढ़ी परिबो आ स्पेशल प्लेजर पाएंगा तुम ग्रीक पढ़ी परिबो. ये तांकर जो स्लो लर्नर को पाएंगा एटा से कहउथले. बा तांकर जो फ्रेंड सर्कल थिला जो माने स्लो लर्नर थिले से माने तो टांकरी ग्रुप रो थिले चर्चिल को ग्रुप रो से मानु से कहउथले तुम Latin as honor पढ़ो और Greek as a treat पढ़ो. Churchill joins Harrow in the summer term. He sees a very big swimming bath. It looks like a river bend, not a normal pool. तेणु विंस्टन चर्चिल समर टाइम रे जॉइन करथिले हैरो को एंड जो टाइम रे तांको स्कूल गोटे प्रोवाइड करथला बिगेस्ट स्विमिंग बाथ एंड जोटा बहुत बड़ गोटे रिवर टाइप रो थिला बेंडिंग हेके थिला स्विमिंग पूल ला एंड दीटा ब्रिज थिला तार दी साइड रे. बॉयज स्पेंड लॉन्ग आवर्स देयर दे बास्क एंड ईट बन्स. तुम सेठी से सन रे खरा रे समान सेठी रिलैक्स करूथिले एंड हेटी बन्स मध ईट करूथले जो फ्री टाइम रे बा जेतोले से जाउथले बाथिंग करया पे का previous time re. The place become full of fun and mischief. A common prank is pushing someone into water. Churchill often does this to boys of his size. One day he sees a boy in a meditative posture. The boy is wrapped in a towel and looks small. तो तांकर सेटे रेगुलर काम थला जे बॉयज मान को पुश करेबा सांग मान को सेटी पुश करेबा. ओके कोठी ना तांकर जो स्विमिंग पूल रे. बट सेमती गोटे दिन एमती कोन हेची चर्चिल तांकर निज क्लास रो पिला मान को पुश करंती. बट से दिन कोन हेची गोटे पिलाटे जे टॉवेल पिंधि की मेडिटेटिव पोस्चर रे एमती स्टैंड बाय हेकी गोटे थिंकिंग पोजीशन रे से स्विमिंग पूल रो एज रे छिड़ा हेची एंड विंस्टन चर्चिल गले ताकू जेकी पुश कर देले पानी भीतर को पेली देले. Churchill thinks him an easy target. He comes silently from behind. He pushes the boy into the water. He holds the towel out of the humanity. ओके दया करिके तांको पर दया भाव देखिके तांको टावेल टाको धरि देले एंड धरि देके से पिलाटा को पानी भीतर को से पुश कर देले.
Suddenly, a furious face comes out. The boy is very strong. He swims fast and chases Churchill. Churchill tries to escape. The boy catches him. Uh, he throws Churchill into the deep water. ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଥିଲା ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ବହୁତ ଜୋରେ ପହଁରିକି ଆସିଲା ସୁଇମିଂ କରିକି ଆସିଲା ଆସିକି ତାକୁ ଚର୍ଚିଲ ସେ ଟାଇମରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ଗ୍ରିପରେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଧରିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା एंड सी स्क्रैम्बल्स हेले स्क्रैम्बल्स माने होची एपड से कोन कले ना एपड बैंक रे छिडा हेतला अमेरी जोडा जे थिला 6th फॉर्म रो जे जहां को ये पानी को पुश कर देथिले तो से आरपडे मतलब नेक्स्ट बैंक द अपोजिट बैंक रे जाके से पहुंच के बाहरले ए क्राउड गैदर्स द बॉय इज अमेरी ही इज हेड ऑफ द हाउस जिम चैंपियन एंड फुटबॉल प्लेयर तो जेतबेले से आरपड बैंक रे जाके पहुंचछंती अदर बॉयज वन आसिले तांको चारिपटे पूरा कवर हे गेले पूरा घेरी गेले एंड तांको कहले जे ही इज द जिम चैंपियन फुटबॉल प्लेयर एंड हेड ऑफ द हाउस तांको नारे जते सारा नेम फेम थिला सब जिंस से कहबाको लागिले he feels he has done sacrilege serious disrespect तांको लागले जे से बहुत बड़ disrespect करिसथि बहुत बड़ भूल कर दैछथि जति में से रिग्रेट करले बा अनुतप्त हेले बा अनुताप करले he goes to apologize he says he mistook him for a junior boy he adds that Ameri is small Ameri gets more angry Churchill quickly recovered तेणु से कहले आमेरी को कहले जे तुम बहुत छोट बा स्मॉल अच्छे बा हाइट तुमर बहुत कम अच्छी तेणु मु तुमको चिन्हि पारली नाही जोथि पांगे आमेरी बहुत रागी भी गला अगेन रागी गला हुरी he says his father is so small but great आमेरी laughs बट जेतले से सब जिंस तांको बुझेई कहला परे आमेरी बुझिलेनी एंड से कहले जे मो फादर जे कि बहुत तांकर हाइट कम अछि एंड जेतले फादर को नाडा ता भीतर को आनेला ऑटोमेटिकली आमेरी टिके हसिला बा लाफ कला खुशी हे गला एंड ताको से छाडी देला लाइक दैट एंड ताको वार्निंग ता चिक्स को धर के किछि फनी रिमार्क्स देला एंड वार्निंग देला जे नेक्स्ट एमती भूल जेमती किछि न हुए सक्सेस कम फ्रॉम एफर्ट्स मेमोरी और लक he gets New Zealand he studies it carefully in exams some questions comes he draws map correctly he compares the luck is gambling luck to gambling win like that before तांकर आ गोटे जिंस हम एथरे ऐड हेनी तांको प्राइज मिलिथिला लेज ऑफ एंशिएंट रोम माकोलेज रो जोथरे से 1200 लाइन को से रिसाइट करथिले कंटीन्यूअसली जोटा कि अदर पिला माने करि पारि नथिले ता से आर्मी एग्जाम रो प्रिपरेशन पाइंगा बहुत सारा पिला जो माने कि आंकोडो भलो नॉलेजेबल से माने फेल्ड हे गले बा ताको क्वालिफाई करि पारले नाही बट विंस्टन चर्चिल ताको क्वालिफाई कर देथिले आर्मी एग्जाम रो पूर्व दिन राति रे से कोन करले ना तांकर ओटा क्वेश्चन आसे जे ड्रॉ द मैप ऑफ सम कंट्रीज किछि कंट्री रो मैप रा आसे ताको ड्रॉ करिया पाएंगा तो ये कोन करले ना किछि चीट्स आनले चीट रे सब लाइक दैट कंट्री मानकर ना लिखि गोटे हेड भीतर रखिले एंड ताको एनोनिमसली ता भीतर गोटे चीट बाहर गले जोथरे कि न्यूजीलैंड रो नाम बाहरला ताऊ राति सारा ताको 35 टाइम्स ट्रिक्स से ताको प्रैक्टिस करिसोंदी एंड ता बटन सकाळ जेतेबेले से एग्जाम दवा पाएंगा गले बा एग्जाम रे से देखिबा को पाइले जे सेम न्यूजीलैंड रो मैप रो क्वेश्चन ता तांको पेपर रो बताऊं क्वेश्चन पेपर फास्ट नंबर ही आसी एंड जेहेतु से एते टाइम धरी ताको बारंबार प्रैक्टिस करिसेंती ताको भलो भाबरे से मैप टाको बनाई देले एंड जोथि पेंगा ताको गोटा हाई मार्क मिलिथिला एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल जो माने कि डिस्क्वालिफाई हे जाइथिले आर्मी एग्जाम रे सेठी विंस्टन चर्चिल क्वालिफाई हे गेले सक्सेस कम फ्रॉम एफर्ट मेमोरी एंड लक तो सक्सेस से कहबो सक्सेस हमको खाली लक रे मिलु सेडा हमको एफर्ट्स भी दबाको पड़िबो ताको मेमोराइज भी करिया को पड़िबो तापर जाके हमको लक हमरो साथ दबो so it's over I think this flowchart will help you a little bit okay thank you so much and in the next class we will do the protector lady thank you